हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लासिक आ रखी है। तो इसमें ये ट्रेन का हॉर्न लग चुका है। पंचर लगाने के बाद आप आवाज़ सुन सकते हैं इसमें। ये जो आवाज़ आ रही है तो ये पंचर लगाने के बाद आवाज़ आई है। तो हो सकता है इसका कैलिबर जाम हो गया हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे ये जैसे आवाज़ आ रही है। तो हम कैलिबर को पुश कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आवाज़ गायब हो गई है। अब आवाज़ नहीं आ रही कोई भी। तो इसको सारा खोल लेते हैं, देन उसके बाद कैलिबर को ग्रीस करते हैं थोड़ा। ये देखो, जैसे अब यहाँ से मैंने हटाया तो थंब हटाया तो देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। और जैसे मैं थंब प्रेस करता हूँ थोड़ा सा तो आवाज़ बंद हो जाती है पूरी, लेकिन टायर जाम हो जाता है। तो इसको खोल लेते हैं और कैलिबर साफ़ करते हैं इसका और ग्रीसिंग करते हैं। तो वीडियो में मैंने फिर पता लगता है कि किस चीज़ की आवाज़ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. पैड देख सकते हैं आप, पूरे के पूरे सही हैं। दूसरा पैड भी हमारा सही है। तो अब कैलिबर निकाल लेते हैं बाहर। ज़बरदस्ती फिट कर दिया बस। रेडी करो। तो गाइस देख सकते हैं ये सारा का सारा सूखा चल रहा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरी ड्राइनेस हो रखी है। ये भी पूरा ड्राई हो रखा है। तो इसे क्लीन करके और ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करके दोबारा लगा के फिर चेक करते हैं। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
तो हमने इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करी है, ज़्यादा कुछ तामझाम खोला नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये अपने आप पूरा नीचे की साइड आ रहा है। तो इतना मूवमेंट इसकी होती है अपने आप ही। तो 0 to 0 चलती है ब्रेक। तो अब इसको लगा के देखते हैं कि आवाज़ बंद हुई है कि नहीं और टायर थोड़ा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हल्का सा थोड़ा टाइट ही चलता है, बट इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. सो गाइस देख सकते हैं हम इस पे अब 24 नंबर का नट लगाने वाले हैं। तो ये नट टाइट करने का एक तरीका भी होता है कि जैसे अब हम इसको पूरा टाइट करने वाले हैं। तो जैसे हमने ये पूरा टायर घुमाया है, तो टायर घुमाने के बाद झटके से ब्रेक मार ले। ये आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेक जब तक लगी रहेगी जब तक ये पूरा टाइट नहीं हो जाएगा नट। तो इसका ये बेनिफिट है हमारे पास कि जितना भी उसने अपना को खींचना है, जो एडजस्टर देख सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे कि अभी मैं नेट टाइट कर रहा हूँ तो उसने ब्रेक मारी हुई है वहाँ पे। ब्रेक मारने का रीज़न यही है कि जितने भी सारे एडजस्टर हैं ये पूरे के पूरे टाइट हो जाएंगे, टायर आगे की साइड चले जाएगा पूरा। तो इसको बाद में टॉर्क लगा के पूरा टाइट कर सकते हैं हम। छोड़ दे अब ब्रेक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई आवाज़ भी नहीं है और ना ही टायर हमारा हार्ड चल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पे न्यू है तो। ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं। थैंक यू।